Hello, good afternoon everyone. So last class we had an idea about about idealism and realism. So I will continue the class. I mean two to three ideologies are left. So we will finish the basics within 1 hour. Na? So whatever I have taught now, at least look at that. My matlab that will be basics है ना. कहीं तक्कू नहीं करी तो मैं तुम्हारे concept जो अच्छे PSIR है you will building that one. ठीक है. So today I will be talking about liberalism. ठीक है. मतलब I mean there is the transition between the medieval to the modern era, right ना. तो individual liberties कौन freedom कौन why there was sense of urgency for the freedom liberty, then liberations of the individuals ना. से जिनसों ना मैं ठीक बुझिया, right. So तो liberalism है ना. So liberalism is actually a modern concept which has been used in many ideological terms like political and economic terms. So if you remember last to last class I have talked about what this is medieval time and एटा हमारा modern time. ठीक है. Medieval time रे कौन होतला the king है ना. Who was the king and the clergy है ना. They used to rule the world. मतलब तांको हिसाब रे हमारा रूलिंग चलता कहीं क्लर्जी किंग को लेजिटिमाइज करता कहीं किंग इज द सन ऑफ गॉड मतलब गॉड रिप्रेजेंटेटिव व्हाट दैट वाज सेड बाय द क्लर्जी है ना. सेतरो कौन थिला व्हाट इज गॉड एट द सेंटर, राइट. गॉड एट द सेंटर जेमिति हम ट्रांजिशन करछु मॉडर्न एज को है ना. सेतल कौन होतला मेनी थिंकर्स केम एंड दे गिव द कांसेप्ट ऑफ लिबरेशन फॉर द इंडिविजुअल्स. मतलब तमर जो एक्सप्लोइटेशंस अच्छी I mean they thought that I mean in this time we need to what relieve the man from this exploitations in the name of God. सेतल कौन आसला सेतल थिंकर्स आसले एंड सेतल जो थिंकिंग प्रोसेस जो होतला सेतले ह्यूमन को से माने मतलब सेंटर पॉइंट को रखिले नॉट गॉड ह्यूमन को. इफ ह्यूमन को सेंटर पॉइंट रखिले मतलब यू आर क्रिएटिंग द कांसेप्ट ऑफ ह्यूमनिज्म है ना. मतलब I can talk about, have you heard about Immanuel Kant? Immanuel Kant है ना. ये कौन करला? He brought the concept of dignity of human being human, then itself calls for the dignity. तो हमें यदि individual मतलब if you are virtuous to become being a human, then dignity is essential for you. मतलब that's enough. तुमके एमने की तुमके exploitation करेंगे. You are a human, then you are I mean the liberty is due for you, right. एडा थला इमानुएल कांत कहतला in the sense of human dignity, right. तापरे आउट कथा कहूछ तो एठो कोन हला मतलब somewhat of liberation हला, right. You are liberating yourself from this exploitation to going towards the मतलब individualism बुझी पाछो. तो एठी हम कोन प्राइमेसी was given to the individuals है ना. सेते पे कहउचंदी देखो जदी प्राइमेसी is given to the individuals है ना concept of state will arrive, right. तमु जदी individuals को प्रोटेक्ट करे रहछ ना से टाइम रे concept of state was evolving. state माने कोन है ना. state also evolved to protect the rights of the individual. आउट कथा when we know our exploitation has happened ना king used to exploit. मुझे पे लिबरलिज्म कथा कहउछ when the king has exploited so much ना तले कोन हबो स्टेट ऑफ रे लक्ष्मण रेखा रखिबो. लक्ष्मण रेखा पडिबो काई पडिबो काई सेतल किंग एक्सप्लोइट करतले ता माने न तुम स्टेट एक्सप्लोइट करिवो काई सेति पई स्टेट को दायरा दिया गला कि तमर किछि राइट्स अछि जोडा कि तुमको फुलफिल करया पडिबो. लाइक यू हैव टू प्रोटेक्ट इंडिविजुअल लिबर्टी, यू हैव टू प्रोटेक्ट लाइफ तापरे you have to give freedom है ना. बुझी पारछो. This has been the criteria for the state to protect the life, liberty and freedom. काई की because exploitation होतला एबे कोन individual is moving towards liberation, right. तो state को गोटे लक्ष्मण रेखा गला जो कि हमें मतलब state operating क्वेश्चंस पड़ला. ओके you can't go beyond this है ना. तमे
you have to safeguard the life of the people कहीं life is actually देखो जितने हम social contract करथुल ना से तो actually state किसी नथिला तो life was somewhat like किसी authority नहीं it was like मतलब somewhat brutish है ना selfish and it was nasty की जरूर की मार दो right so it was urged that state should protect the life of the person except according to the violation of law है ना except otherwise बुझीपार से किसी जदि किसी भूल कर दो देन तुम तो दंड दे परिबो तापरे लिबर्टी है ना लिबर्टी एमिति नाही जे मतलब लिबर्टी आउट ऑफ प्रॉपर्टी है ना ऑब्वियसली यू हैव टू गिव लिबर्टी तमे तांको किसी तांको एमिति भी काम करि परिबो जे तांको एक्सप्लोइटेशन होतो तांको मर्जी बिना तमे किसी करि परिबोनी से जिंसटा लिबर्टी ऊपर फोकस करा जाउछि तापरे प्रॉपर्टी राइट भाई प्रॉपर्टी मेडिवल टाइम रे कौन होता राजा को जो लगुला कि ओके मुझे इसका घर पसंद आ रहा है मतलब से नहीं जीव कहीं ही वाज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड ताको लेजिटिमाइज करछंती बट मॉडर्न टाइम असला बेलको देन थिंकर सेड व्हाट काइंड ऑफ बकवास थिंग इज दिस प्रॉपर्टी के सेवर्ड प्रॉपर्टी इंडिविजुअल प्रॉपर्टी मतलब नोबडी कैन टच योर प्रॉपर्टी एंड प्रॉपर्टी सेफगार्ड की करिवो स्टेट डोंट यू थिंक दिस थिंग्स आर राइट नाउ कौन आम कॉन्स्टिट्यूशन रे भी अच्छी लाइक लाइफ आर्टिकल 21 राइट फ्रीडम आर्टिकल 19 है ना प्रॉपर्टी अगर कौन था 31 रे थिला एबे ताको कोड फोपाडछन्ते 300 ए रे दिस इज द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट लिबर्टी प्रॉपर्टी फ्रीडम बुझी पाछो तो दिस थिंग्स आर एसेंशियल नेचर ऑफ एन इंडिविजुअल एंड आपको तमे टच भी करि परिबोनी बुझो तो जितला माने मॉडर्न कांसेप्ट का स्टेट को तो दायरा दिया गला देन दे हैव टू टेक केयर ऑफ दिस थिंग्स मुझे यदि आउट टिके एक्सट्रापोलेट करिवि have if you have studied about political science earlier na तमे गोटे थिंकर ना जानिथबो थॉमस हॉब्स yes लॉक कथा कुछ लॉक हैव यू हर्ड अबाउट दिस लॉक आकु कोनती फादर ऑफ लिबरलिज्म लॉक को कोनती फादर ऑफ लिबरलिज्म काहे कि लॉक वांटेड ए मिनिमल स्टेट बुझी परछो मिनिमल स्टेट माने कौन स्टेट इज देयर टू प्रोटेक्ट योर लाइफ लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी आंकर दायरा ला लाइफ लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी बुझी पार लॉ गेव द कांसेप्ट लाइफ लिबर्टी प्रॉपर्टी काहे कि हमर जो लाइफ ता अछि ना इट इज गिवन बाय नेचर है ना इट इज नॉट गिवन बाय एनी किंग एटा नेचर तो लाइफ इटसेल्फ इज अ नेचुरल राइट एंड आकु हमरो के वायलेशन करि परिबनी सो लॉक जो थिला मो ऑब्वियसली छोटे जिंस रो आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग एवरीथिंग बिकॉज़ मतलब मते टिके ब्रॉडर वे टच करिया पड़ियो तो जो लॉक अछि सो ही वाज अ फादर ऑफ लिबरलिज्म है ना सो ही गिव द कांसेप्ट दैट लाइफ itself is given by the nature so nobody can take over your life है ना even the king even the state so ये concept है देथिला at the same time मुझे दी बेंथम कथा जिबे बेंथम है ना बेंथम gave the मतलब concept of legal right जदि आगु पढिबो मतलब है ना बेंथम gave the concept of legal right काहे कि देखो if से कहूची मतलब लॉ कहूची it's all about natural right but actually जदि तमे this is your right ना a word ता बुझी परछो right means it should be legitimized by whom law and society बुझी परछो these two things this right should be legitimized by law and society law केटा कोइ नथला मतलब लॉ वाज टॉकिंग अबाउट नेचुरल राइट मतलब नेचुरल राइट हम किछि भी कोइ परिया राइट बट बेंथम जे थिला he was one step solution this rights should be legitimized by law and society and law and society का अंडर होबा कथा स्टेट अंडर होबा कथा है ना स्टेट अंडर होबा कथा when we are if I am asking about right ना there should be some authority बुझी पड़ो now state is the authority बुझी परछो एटी कोन थिला हमर जो राइट टू लाइफ थिला इट्स द माने अकॉर्डिंग टू द लॉ द राइट टू लाइफ वाज सोर्स ऑफ नेचर बट अकॉर्डिंग टू बेंथम द राइट टू लाइफ वाज अ सोर्स ऑफ स्टेट को दिए छी माने से वन स्टेप फॉरवर्ड बुझी परछो तो एठी हला हमर लीगल राइट रे कांसेप्ट आस्थिला मतलब बिकॉज़
according to the, I mean, obviously if rights should be there, na, right should be legitimized under the law. Law कौन कहूँ? If I have the property, na, it should be under the constitution. ମୁଁ ଏମିତି ବି କାହା obviously देखो these things are ना the culmination of many ideas. Things what we are enjoying now ना, मतलब एटा आगुर नथिला ना, आमको एबे मिली जाइछ. We know this right, but आगुर तो एटा नथिला. So we don't understand the importance of such things, right? Law हेगला, society interdependent सभा कथा, society everyone should legitimize each other. बुझी पारछ? Law हेगला, and obviously property, if somebody is having property, it's according to the Indian constitution, right to property, right? जहाँ भी माने to be मतलब जहाँ भी पटा वटा सब बाहरी बो, obviously it's accordance with the constitution. सेटा तुम के नहीं परिबेनी, बुझी पारछ? बगबड़ लगा कथा, तारी भी अलग सीन होची. Anyways, so Bentham was what? The first one to give the concept of legal right, okay? And legal right from the state. He legitimized the state as the authority who can give you the source of right. तो हम right to life भी ना state ऊपर depend करियो. If state चाहिए with laws they can take your rights. काहे की? Because before the state ना अगुर कौन थिला? I mean social contract होतिला where the मतलब individuals were in the life of brutish, short, brutish, nasty and all that. काहे सेतल की state ର concept नथिला. Everybody can kill each other. बुझी पारो? सेति में state को legitimize करिया कथा. State যদি powerful हेले they can save you at many levels. That was the concept of state, right? So this is somewhat you got the idea of liberalism, है ना? Obviously टिक्के मतलब मैंने short रे कोया पड़ जाए. I can talk because always I have to speak within a few hours, right? मतलब 1 hour limit मिर्च. Okay. So जो liberalism अच्छे ना, liberalism अच्छे. आको extrapolate करी economic sense रे मान ली. Economic sense क्या आणला? Adam Smith आणला. आको liberalism को ना extrapolate करी आको economic sense आणला. Economy रे Adam Smith. He was a Glasgow professor, है ना? He wrote the book called Wealth of Nations, है ना? Wealth of Nations, है ना? देखो जेमती individual को liberty मिलची ना, he wanted liberty in economy also. मतलब I have the liberty to earn, I have the liberty to have property, I have the liberty to give wages. से यही concept टा कोडी economy रे आणला. मतलब से माने एठी कौन से चाहूतला हमर जो okay ठीक है. So in terms of this, I mean he wanted this मतलब he extrapolated this liberalism in economic sense. Actually कौन थिला कि so he wanted the state जोड़ा अछि ना, state रो control minimal रहबा कथा. Minimal बुझी पारछो? Individuals have the freedom, individuals should have the freedom से केते कमे परिबे, केते money से माने कमे परिबे, केते property रखी परिबे. काहे की minimal control हेले ना, it's all about कौन minimal control जो state रहबो ना, law and demand ऊपर फर्क पड़िबोनी. बुझी पारछो? demand ऊपर फर्क पड़िबोनी. जेते demand बढ़िबो से हिसाब रे प्रोडक्ट सुरा बनिबो. बुझी पारछो? laws of demand से जिनसडा एडम स्मिथ कोच. तो डोंट यू थिंक ए जो कांसेप्ट जो आसिला मतलब सपोज मतलब एड एक्चुअली कोन वेस्ट पॉपुलर हेतला. वेस्ट रे सेतल कोन एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन चलतला, एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन चलतला से टाइम रे. तापरे सेतल कोन होतला मतलब जेहेतु इंडस्ट्रियलाइजेशन चलतला सो सेतल कोन मशीन्स पळे आसला, मशीन्स आस्तला, है ना? एंड से टाइम रे वर्कर्स रो कांसेप्ट आसला. वर्कर्स बुझी पारे? वर्कर्स काम करिवे ताको रिप्लेस करिवे किए मशीन्स रिप्लेस कर देन मोर कॉम्पिटिटिवनेस आसीबो. बट एट द सेम टाइम स्टेट रो कंट्रोल नथिला. बुझी पारो? स्टेट वाज नॉट इन कंट्रोलिंग मोड. सेति पे कोन हला? सेति में तुम गोटे कथा सेति में कोन हला? जेतो स्टेट कंट्रोल हला ना, डोंट यू थिंक इनइक्वालिटी बढ़िबो? का भीतर इनइक्वालिटी बढ़िबो? जे फैक्ट्री ओनर अछंती आउ एपट जो वर्कर अछंती, है ना? कहीं फैक्ट्री ओनर स्टार्ट अक्युमुलेटिंग वेल्थ भी गोटे कांसेप्ट अछि. कहीं खेला देखो विदाउट स्टेट इंटरफेरेंस जदी आजि का डेट रे जदी इंडिया रे जदी स्टेट जदी इंटरफेयर करिवोनी, कंपनीज लॉस जदी आनिवोनी, डोंट यू थिंक वेल्थ अक्युमुलेशन विल बी many at
at any power मतलब heavy हे जीवो गोटे जगह रे एमिदी भी wealth accumulation सोचे but without state control ना it's very much difficult है ना तो ए जिनसो सब किए एनालाइज करला से टाइम रे जर्मनी रो फिलोसोफर थिला कार्ल मार्क्स है ना कार्ल मार्क्स एनालाइज ऑल द सिचुएशंस दैट इनइक्वालिटी बढ़िबार को चलचे इनइक्वालिटी इन द सेंस ओके 80 I have to go this है ना कार्ल मार्क्स रो इनइक्वालिटी बढ़ुची मतलब एठी कोन होची कैपिटलिस्ट आउ एटी वर्कर माने अंको पाखरे हैव्स आउ एटी हैव नॉट बुझी पारछ मतलब कैपिटलिस्ट पाखरे कोन अछि पैसा अछि बट वर्कर पाखरे कोन अछि दे आर द लेबरर्स बट इट कंट्रोल कहां पाखरे नहीं स्टेट कंट्रोल नहीं कहेंगी वेल्थ ऑफ नेशंस एडम स्मिथ स्टेट को फ्री कर दियो मतलब स्टेट इज द मिनिमल स्टेट रे इंटरफेरेंस ही नहीं मतलब कोन इट डिपेंड्स अपॉन द सप्लाई एंड डिमांड बुझी पारछ तो एठी कोन हबो कैपिटलिस्ट विल accumulate wealth suppose I am saying that okay capitalist suppose गोटे प्रोडक्ट बनेले ता भीतर कोन अछि लेबर रेंट सब कॉस्ट हे कि 100 रुपीस होछि ओके कॉस्ट लेबर रेंट मिसी के 100 रुपीस होछि एंड दे सेल अराउंड 200 रुपीस मतलब 100 रुपीस से प्रॉफिट हैला ना ओके दे सेल अराउंड 300 रुपीस मतलब 200 रुपीस से प्रॉफिट हैला ना इफ 200 रुपीस से प्रॉफिट हैला से कौन करबे नेक्स्ट 100 रुपीस ताय से 200 रु 100 रुपीस नै जेबे पुणी कौन करेंगे पुणी से लेबर रेंट को देवे ऑब्वियसली पुणी से प्रोडक्ट बनेबे पुणी से लेबर रेंट को देवे पुणी से ताको 300 रुपीस रे बनेबे मतलब प्रॉफिट जो 100 रुपीस सेला आउरी 200 रुपीस प्रॉफिट आसीबो बुझी पार गोटे एग्जांपल कहूछ बुझी पारछ तो एठी कोन हबो प्रॉफिट एक्युमुलेशन हबो बुझी पारछ प्रॉफिट एक्युमुलेशन सब माने कोन आंको भितर फासला बढ़ी जीवो बुझी पारछ आंको भितर फासला बढ़ी जीवो कैपिटलिस्ट एंड वर्कर आ गोटे कथा वर्कर को सेमते सैलरी देबे जोड़ा कि गोटे दिन पे एसेंशियल हेतबो ताको नेक्स्ट डे रे देबेन बुझी पारछ आ जदी नेक्स्ट डे रे देबे आ वर्कर आसीबो सो सिस्टम भी सेमती एक्सप्लोइटेटिव थिला दे वोंट गिव सफिशिएंट मनी सो दैट गोटे वीक में ताका खर्चा नो बिकॉज सेट स्टेट रो कंट्रोल नथला लेबर लॉस किछि भी नथला से टाइम रे तो आंको भितरे फासला पड़ुछि बट अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स ना गोटे टाइम एमिति भी आसीबो दिस विल लीड टू एक्सप्लोजन मतलब वायलेंट रेवोल्यूशन जोटा कि तुम लाल सलाम पढ़छो दिस विल एक्सप्लोड कहीं दिस इज एक्चुअली एंड स्पॉन्टेनियस वायलेंट रेवोल्यूशन बुझी पारछो एडा थिला तार कांसेप्ट थिला एते एक्सप्लोटेशन हे जीवो ना कार्ल मार्क्स कहबो कि ठीक अछि तुम करछो बट इट विल लीड टू एन एक्सप्लोटेशन व्हिच विल बी अनकंट्रोलेबल सेट टू ब्लास्ट विल लीड टू दिस वायलेंट एक्सप्लोटेशन ए जिंस को डरी करी कैपिटलिज्म मतलब कौन कहते दे चेंज देमसेल्फ तांको सोशलिज्म आनते बुझी पारछो कौन कहते को वेलफेयर स्कीम्स आनते आकु डरी करी तो एक्चुअली तुम जदी कार्ल मार्क्स का कांसेप्ट रे जीवो ना इफ यू गो विद द कांसेप्ट ऑफ कार्ल मार्क्स ना he always wanted a मतलब I mean he never believed in the concept of nation है ना nation Karl Marx never believed in the concept of nation मतलब he wanted the workers of the world should unite and fight against the slavery of these chains है ना he wanted the workers to be united right united बुझी पारछो तो he never wanted this he wanted all the workers to fight against this slavery कहीं तुम पर जुल्म होची तो जुल्म अगेंस्ट फाइट करिया पड़िबो एक्चुअली से कोन कहतला वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड कथा कहतला बुझी पारछो सेति पई सबु आडे जदी वर्ल्ड रे वर्कर्स जदी मतलब दे विल फाइट ना why you need nation then everybody at their area their position they will fight बुझी पार एक्चुअली according to the Karl Marx ना ए जो स्टेट हे गला है ना स्टेट हे गला पुलिस हे गला
police है defense है ना, these all are bogus things. According to him, this all state and police na is an instrument of capitalist class. It is there to save them. बुझी पाठ inequality पड़ছে, that's why there is state and police. Otherwise you don't need. ସେଥିପାଇଁ କହେ workers of the whole world should unite and against these exploitations. बुझी पाठ देखो nation why you need defense? Why you need defense? Because when a nation will attack, right? गुजे nation attack करिवो, you need defense. से कौन कहे से जो तार जो कार्ल मार्क्स जो concept अच्छी, जो मार्क्सिज्म अच्छी या कम्युनिज्म अच्छी, it will spread to all over the world. बुझी पाठ in the sense literally it will have a borderless nation. बुझी पाठ it will have a borderless nation where you don't get, you won't have any defense, state, police. And say to कोई ना, these are the instrument of capitalist class. Karl Marx was literally saying that. बुझी पाठ से Karl Marx idea is actually an utopian. तमें जो देखो जो आजिका डेट रे CM Marxist and all that है ना, I mean they never called for, I mean actually they are not. तांकर idea अलग आज, I will tell you, right? तो एठी देखो एठी कौन है capitalist class, this will call for spontaneous revolutions and आ परे गोटे stage आसीबो कौन Marx socialism. Marx socialism. देखो जितलो violent revolutions हो ना, this will मतलब this will lead to the capture of all capitalist properties. मतलब एठी कौन आसीबो अंचो एठी कौन आसीबो अंचो dictatorship of proletariat. This area will call for the dictatorship of proletariat. किछि समय पे ना किछि class जो worker or some classes ना will control the government and तांकर main aim कौन हो जानचो classless society. Classless society. This is the main of Marx socialism है ना. Violent revolution that is spontaneous. Violent revolution हो then socialism आसो. Socialism रे कौन they will eliminate all the classes. किछि दिनों पे से मैंने government control करी, they will eliminate all the classes and this will lead to classless society. This was Marx was telling about. And out of kotha the last stage what आपरे कौन आसीबो communism. This is the last stage of Marx. आर भी गोटे कथा कहबी ए जो communism रे होबो ना, there will be no state, no party. This is the last stage of communism. Do you think ajika date re anybody has this communism given by this Marx? Because एठी कौन हबो ना एठी समस्ते जो जो क्लास होचंती they will do their own work. मतलब ए जगह रे कौन हबो ना कौन हबो मतलब if I am माने ए जगह रे this state will be somewhat मतलब if I want to become doctor I will become doctor. If I like repairing TV fridge I will do the same. It's like voluntary groups. ए जगह रे voluntary groups formations हबो है ना. Voluntary groups मतलब तुमको जो जो काम भल लागु तुम सेडा करिवो and you will help each other. मतलब एठी जो गोटे सोसाइटी हबो truly interdependent society form हबो. Interdependent society. Okay, truly interdependent society. मने छी ओशो जो थिला यूएस रे गोटे रजनीशपुरम जगह रे से माने he tried to bring that concept. परे तांकू मतलब he भी सेम गोटे सोसाइटी बनेथिले जोटी की निज निज इच्छा काम करछि. डॉक्टर अछि के इंजीनियर अछि किए टायर पंक्चर ठीक कर दे सिम सोसाइटी बनौथिले एंड दे आर हेल्पिंग ईच अदर यूजर थिला पर से इंडिया आसले तांको डेथ हे जातला ओशो जो सोसाइटी बनैतला एठो कोन हो जे आई कैन से इट्स एठो कोन हो जे लिबरेशंस हो जे लिबरेशंस फ्रॉम व्हाट लिबरेशन फ्रॉम इंडिविजुअलिज्म जो फ्रॉम इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशंस बुझि पाछो एटी लिबरेशन फ्रॉम इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन. देखो एक्चुअली मार्क्स कौन कहे जानचो मार्क्स वाला कांसेप्ट कहे मतलब यू शुड डू द वर्क व्हिच यू लाइक है ना. ह्यूमन जो ह्यूमन अछि ना इट्स ऑल अबाउट क्रिएटिविटी बुझि पाछो. ह्यूमन इज ऑल अबाउट क्रिएटिविटी. इफ यू डोंट लाइक द वर्क व्हाई यू आर डूइंग दैट. मतलब तमे जो ए जो जगह थिला कैपिटलिज्म जो जगह थिला सेटू कोन होतला गोटे सिस्टम क्रिएट हे जातला. से जो सिस्टम रे यू आर फोर्स्ड टू डू वर्क राइट. तुम्हें वर्कर अच्छो आ तुम कि जानी पारनो कहीं जानी पारनो बिकॉज तुमको ऑलरेडी गोटे सिस्टम फिट होइछि बिकॉज
ए जो नेशन रे ओके आमर जो नेशन अच्छी ता भितर यू कांट गो फॉर अनार्की कहीं दिस पैट्रियोटिज्म भावना आछी राइट मु कहीं गोटे आउटे कहीं कैपिटलिस्ट को अटैक करेंगे ही इज आल्सो ह्यूमन बीइंग राइट व्हाई शुड आई अटैक अस आ गोटे कथा रिलीजन है ना रिलीजन इज ओपियम ऑफ मासेस है ना से लोग भी चर्च जाऊँ मु भी चर्च जाऊँ व्हाई शुड आई अटैक देम बुझी पार मे बी मो कर्म किसी भूल देते सी कैपिटलिस्ट जो अच्छी पाखे से भी चर्च जाऊँ से भी प्रार्थना कर प्रार्थना कर बट एट द सेम टाइम ता कर्म भल थो मो कर्म खराब थो दैट्स व्हाई आई एम नॉट एबल टू अर्न मोर बुझी पार कि मार्क्स कह कथा ना एटा सब भूल कॉन्सेप्ट गॉड पाखे गॉड मतलब गॉड नेवर क्रिएटेड मैन इट्स एक्चुअली मैन क्रिएट द कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड एंड तुम गॉड ना तुम शोषण हो दिस व्हाट मार्क्स यूज्ड टू से दैट सेतिपय कहती रिलीजन इज ओपियम ऑफ मासेस बुझी पारछ तुम गॉड ना तुम शोषण हम तुम किसी जानी परिबनी आ तुम सेठी पड़ी थबो बुझी पारछ दैट इज व्हाई मार्क्स सेड दैट आई मीन गोटे टाइम आसीबो जोटी की मतलब एक्सप्लोइटेशन एते चरम सीमा रे पहुंच जीवो दिस एक्सप्लोइटेशन विल बी व्हाट स्पॉन्टेनियस यू मीन स्पॉन्टेनियस आ गोटे कथा कहूँ आजिका डेट रे तुम जोटा देखुच मतलब लेनिन है ना लेनिन कथा देखुच ना लेनिन also waited for this spontaneous revolution but it never happened right लेनिन जो काम करतला माने spontaneous revolution पे वेट करतला it never happened काहे कि मतलब this is kind of utopian concept right सी कौन कला कम्युनिस्ट पार्टी फॉर्म कला and he went for that revolution against the czar है ना czar against मार्क्स रो कहबा कथा कोन छ मतलब revolution can't be मतलब cannot be done by any peasants or any property landholders it will be done by the workers because तांको पाखे किछि property नाही because they are classless society they belong to classless society but Lenin कोन करला छ he called the peasants for violence मतलब revolution he called the peasants for revolution Lenin it hasla so Lenin is not following any मतलब Lenin is not following actual Marx idea मार्क्स कहला कि जिसके पास खोने के लिए कुछ नहीं है वही आएगा आगे बट एठी कोन अछि पीजेंट वक्त लैंड तो अछि ना दे कॉल फॉर दिस ताको आनी कि से तार रेवोल्यूशंस करला लेनिन जोटा थिला ताको लेनिनिज्म भी कहते बुझी पार ताको लेनिनिज्म भी कहते सेमती चाइना रे माओ आस्थला माओ आल्सो फॉर्म द कम्युनिस्ट पार्टी माओ भी सेमती आणला माओ भी सेमती पीजेंट्स को आनी ग्रुप रे आणला एक्चुअली कोन अछि Karl Marx जो ना see actually he was against the formation of party because party will lead to what tyranny like government party and government will control the people तांको ऊपर rules enforce करिवो he was against that so एठी कोन हला लेनिन हेगला और माओ हेगला they formed the party this guy formed मतलब कोन चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी सीसीपी बुझी पारछ लेनिन गोटे लेनिन भी तो पार्टी फॉर्म करथला कम्युनिस्ट इंटरनेशनल पार्टी फॉर्म करथला से टाइम रे बुझी पार ताकू कोनती वैनगार्ड ऑफ रेवोल्यूशंस कोनती सेतोले जो पार्टी फॉर्म करथला ना लेनिन आल्सो बिकम टायरानी है ना आई मीन मार्क्स जहां प्रेडिक्ट करथला लेनिन भी सेया करला लेनिन यूज्ड टू सेंड दोस वर्कर्स टू गुड साइबेरिया पठौतला से सेतोले साइबेरिया मतलब इट इज अगेंस्ट लिबर्टी बुझी पार इंडिविजुअल लिबर्टी नहीं मार्क्स कॉल्ड फॉर द इंडिविजुअल लिबर्टी तुमको जोड़ा भलो सेटा को ही वांटेड टू लिबरेट इंडिविजुअल्स फ्रॉम द एक्सप्लॉयटेशंस ऑफ इकोनॉमी बुझी पारछ he wanted to liberate individuals but एठी कोन हला लेनिन जेतला असला he formed this communist international then he sent all the workers to the मतलब किछि वर्कर्स टू साइबेरिया कोल्ड रीजन जोडी तुम फैक्ट्री सेटअप करी काम इट वाज अगेंस्ट लिबर्टी माओ असला he also formed this party and सेटल क्वांटाई शेख जो थिला तांकर सेटिका जो रूलर थिले आई मीन दे हैड अ वायलेंट स्ट्रगल अगेंस्ट देम तापर तांको धकेल करिके से माने कोडी पकेले फॉर्मोस आइलैंड जोटा अछि आजिका डेट ताइवान माओ वाज दैट they had a bloody revolutions against those parties क्वांटाई शेख किंगडम some words I don't forgot तांको धकेल के माने फॉर्मोस आइलैंड को टाणी देले एंड दे फॉर्म ताइवान एंड ताको कोनती पीपल्स मतलब रिपब्लिक ऑफ चाइना दैट ताइवान को
and anku kon the People's Republic of China bujhi parcho. So this is the evolutions of this Chinese party. So harari gote kotha kaibi, Marx never called for this party thing. His idea was too utopic, है ना, मतलब it was utopian to such an extent that it is beyond practicality. Obviously बिना पार्टी किसी ही परियो के आज का डेट रे you need some leaders to do that. Marx was without leaders, मतलब leader, I mean Marx always think that leaders means exploitations. If you मतलब obviously a timer तो Lenin भी exploit करला. It was the bloody revolution. Have you heard about the great purge 1917, the great purge माने कौन लेनिन अगेंस्ट रे जे भी माने डिसेंटिंग व्यूज देला तक खत्म कर देला. द ग्रेट पर्च, द ब्लडी रेवोल्यूशन कौन देखो आप पर तो ब्लडी रेवोल्यूशन पे देला. इट इज देयर इन द बुक इफ यू मतलब स्टडी अबाउट ऑल दिस थिंग्स, है ना. ओके ठीक है. तापर आउट कथा where did the I will talk, I mean writing gale बहुत टाइम नहीं जाउछ. Where Marx got Marx quote mane how Marx got this idea of revolutions. First of all he talked about मतलब he got inspired from French Revolution, है ना. 1789 जोटा हितला बोधे. I have to see the date. 1789 बोधे French Revolutions कौन हितला. They were against the Louis XIV, right? They were against this कौन हितला. They were against the king. They were against absolute monarch. French Revolution problem कौन हितला. He was inspired by French Revolution. At the same time he was a critic of French Revolution. कहेंगे French Revolution रे जो capitalist class थिला ना, they were also the part. कहेंगे से टाइम रे जो ancient टाइम रे कौन होतला, lord और serf, है ना. It did a class according to the Marx. Lord and serf were the classes. Lord used to control the land and serf used to work at this land. They like zamindar and peasants, है ना. तो obviously French Revolution is like जो सेठी का जो capitalist थे कोई like see सेठी जो capitalist थे they wanted मतलब land. देखो we have money, we have machines. तुमको लॉर्ड जते के पैसा दोछु टू होम किंग लॉर्ड तुमको जते पैसा दोछे we can give you double. हम पाखरे machines अछि, give us the land. सेमती रेवोल्यूशन सही करी फ्रेंच रेवोल्यूशन सला सेठी दीटा ग्रुप थिले, गोटे कैपिटलिस्ट और वर्कर क्लास थिले. माने किंग जोडी पसंद ना दीटा क्लास थिला. एटी कैपिटलिस्ट थिला, वर्कर थिला. एटा राइट लेफ्ट बुझी पाछो. तो वर्कर वेर अगेंस्ट कैपिटलिस्ट एंड कैपिटलिस्ट वेर अगेंस्ट वर्कर आफ्टर दिस रेवोल्यूशंस. एठी कोन कैपिटलिस्ट थिला कहले कि we want to build industries so that jobs create होबो, सेठु पॉवर्टी रिड्यूस होबो. लेबर क्लास कोन थिले, लेबर कोन we want to support the laborers माने जो वर्कर क्लास थिले so that तांकर भी किछि भला हे परिबो, because too much of exploitation is not good. एडी लेफ्ट. So this was the evolution of right and left wing. बुझी पा, this was the evolution of right and left wing. आकु कोन दी कंजर्वेटिव क्लास भी कोन राइट, मतलब राइट विंग यू अंडरस्टैंड मतलब कोन कोन bit traditional थे, टियर traditional थे, nationalism को support करते हुए. Then they will support the industries, they will support new technology. बुझी पाछो, they are traditionally conservatives. सेते में से टाइम रे किंग जो थिला, किंग रे राइट साइड रे से कैपिटलिस्ट ले, लेफ्ट साइड वर्कर बसते ले. तो एक्चुअली मार्क्स वाज ए वेरी क्रिटिक काहे कि ता भीतर कैपिटलिस्ट रे हाथ थिला फ्रेंच रेवोल्यूशन रे. सो ही वाज क्रिटिकल अबाउट दैट. जोडी कैपिटलिज्म है अच्छी. तो अकॉर्डिंग टू मार्क्स French Revolution was a failed idea, according to the Marx, right? तापर आउट होता. Then Marx also inspired by the British school of political economy, like Adam Smith है ना. Second है Adam Smith रे जो economy थिला, मतलब तांकर जो school of thought थिला, wealth of nations. I mean Adam Smith जोड़ा कोई थिला कि wealth of nations ना, Marx ताको कोई ले wealth of few. कैपिटलिज्म असला मतलब से टाइम रे शोषण बहुत हैला, वर्कर रे शोषण बहुत हैला. देन वेल्थ गॉट accumulated in the hands of few. बुझी पाछो. That's why Marx got inspired to give his theories. Marxism जोड़ा कोन थी. At the end communism माने बुझी पाछो. First violent revolutions, then Marx socialism,
then communism, which was very much utopic. Socialism means control, controlled by the classes. मतलब government will take care of your properties, will take care of all these properties and पर ताको distribute करिवे. से जिनका मार्क्स दउथला बुझिबा आज का देखो एक्चुअली सोशलिज्म ना सीजे जो हॉर्ड अछि आई थिंक सीजे हॉर्ड गोटे जिनस होता सोशलिज्म जो हैट अछि ना इट हैज बीन वोर बाय मेनी पीपल ना तार जो हैट रो स्ट्रक्चर ही डिफॉर्म हो जाय. इट इज नॉट द सेम हैट एनीमोर बुझि पाछो. सोशलिज्म अलगा हे गलानी. इंडिया रे सोशलिज्म अलगा, चाइना रे सोशलिज्म अलगा, अमेरिका रे सोशलिज्म अलगा बुझि पाछो. तो इट हैज बीन गिवन न्यूमरस टाइप्स ऑफ सोशलिज्म. यूटोपियन सोशलिज्म भी अच्छी जोटा कि केबे आसी परिबनी बुझि पाछो. तो तापरे हेगेल आ गोटे हला कि फ्रेंच रेवोल्यूशंस आ गोटे हला कि ब्रिटिश पॉलिटिकल इकोनॉमी वेयर मार्क्स गोट इंस्पायर्ड आ गोटे हला कि हेगेल कौन देथला डायलेक्ट्रिक्स देथला है ना. जस्ट आगु पड़िबो. ही गेव द कांसेप्ट ऑफ डायलेक्ट्रिक्स माने हिस्ट्री इज अ मोमेंट ऑफ मतलब मोमेंट ऑफ आइडियाज है ना. एक्चुअली कौन कहला जो आइडियाज होछ ना हिस्ट्री इज ऑल अबाउट आइडियाज विल लीड टू पॉजिटिव चेंज है ना. आइडियाज विल गिव यू पॉजिटिव चेंज विथ डायलेक्ट्रिक्स. आइडिया विथ जो डायलेक्ट्रिक्स आसीबो मतलब रीजनिंग आसीबो तमे डिबेट करिवो ना इट विल गिव यू पॉजिटिव रिजल्ट्स. सेटा हेगेल कहथला से टाइम रे एंड ही वाज वेरी मच इंस्पायर्ड. हेगेल थिला जर्मन फिलोसोफर, ऑफिशियल फिलोसोफर ऑफ द स्टेट, जर्मन स्टेट. he was much more inspired. किंतु प्रॉब्लम कौन हला he was giving ideal dialecticism. किंतु हमरो जो मार्क्स अछि आको चेंज कला कोथरे materialism material dialectics from idea to materialism. Obviously we मतलब मार्क्स focused on what material concentration of wealth है ना. सी तो आइडिया को फोकस करतेला. आइडिया कैन गिव यू आइडियाज ओनली मतलब तो थियोरी रो आइडिया हो बट मटेरियल जदि फोकस करियो ना यू विल नो द एक्चुअल कांसेप्ट. कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ इन फ्यू हैंड्स दैट्स व्हाई एक्सप्लॉइटेशन इज हैपनिंग. सो से जिनसोटा देला देखो आई विल गिव अनदर एग्जांपल. देखो द वेस्ट वांट डेमोक्रेसी एवरीवेयर. ओके वेस्ट वांट डेमोक्रेसी एवरीवेयर. आई एम टॉकिंग अबाउट मटेरियलिस्टिक पर्सपेक्टिव राइट. जोटी ऑयल मिलुची जोटी ऑयल अच्छी से चाहिए डिक्टेटरशिप करने आ सेठिकार डिक्टेटर जदि आंक वेस्ट रो कथा जदि मानिले आमे तुम सस्तार ऑयल देबू वेस्ट विल अलाउ. वेस्ट कौन करे ओके तुम डिक्टेटरशिप चलाओ. जी ऑयल दबनी जो डिक्टेटरशिप ऑयल दबनी से जबरदस्ती डेमोक्रेसी फसेबे. दैट इज कॉल्ड इफ यू अंडरस्टैंड मटेरियलिज्म बुझी पारछो. इट इज अकॉर्डिंग टू द वेस्ट. आइडियलिज्म कहीं काम करिवनी. इट्स ऑल अबाउट मटेरियलिज्म मतलब which can give you a tangible feeling बुझी पाछो. इट्स अ हिपोक्रेसी ऑफ वेस्ट. जे तमर कथा मानला नहीं तुम सेडी जबरदस्ती तक्का पलट करेबो सेडी इंस्टेबिलिटी आनिबो. यू विल ट्राई टू गिव डेमोक्रेसी. साउदी अरेबिया नो डेमोक्रेसी. ऑयल दे आर एक्टिंग अकॉर्डिंग द बिहेस्ट ऑफ यूएसए बुझी पाछो. ईरान को बहुत इंस्टेबिलिटी करूची वेस्ट. दे आर ट्राइंग टू डू है ना. तो इट्स ऑल अबाउट हिपोक्रेसी राइट. तो ए जिनसडा हम कहूँ मतलब hope you are getting what I am speaking है ना. मुझे just a gist दोस्तली so that you can understand what is yeah. So my point is that at least you should know what is communism and Marxism है ना. देखो this is एडाला violent revolutions है ना. पैसा आकु कहते कौन सरप्लस थियोरी कहते. जो वेल्थ जो accumulate होते हैं रिकार्डो सरप्लस थियोरी जोटा कि जर्मन फिलोसोफर मार्क्स से इंस्पायर हेतला. तो एठु कौन हम स्पॉन्टेनियस वायलेंट रेवोल्यूशंस हबो जोटा कि स्पॉन्टेनियस हबो. इट वोंट माने कि आसिकरी करेबो नो इट इज विल बी स्पॉन्टेनियस. तापरे कोन हबो मार्क्स सोशलिज्म होते जोटी की क्लासलेस सोसाइटी फॉर्म हबो. एवरीबॉडी विल हैव देयर ओन वर्क बुझी पारछो. जो क्लास जो डिवाइड हो जातला बुझी पारछो प्रॉपर्टी सेटा सब कोन डिस्ट्रीब्यूट हबो विद इन द स्टेट्स विद स्टेट्स एंड गवर्नमेंट ताको डिस्ट्रीब्यूट करे विद पीपल. तापरे कोन हबो कम्युनिज्म आसीबो बुझी पारछो. वेयर एवरी पीपल विल हैव देयर चॉइसेस विल हैव देयर लिबर्टी टू वर्क. तुमको जोड़ा करे तुम से जिन कर पार. आउट एग्जांपल दूची देखो सी व्हाई मार्क्स इज टॉकिंग अबाउट दिस इंडिविजुअल लिबरलिज्म. तुम देखो मतलब इन कॉर्पोरेट कल्चर मंडे ट्यूसडे दे आर वर्किंग राइट. दे आर वर्किंग मंडे ट्यूसडे देन वेडनेसडे हेला बेलू कहबो के बासिबो यार सैटरडे राइट. तापरे सैटरडे संडे दे विल गो टू द पब
they will discuss all these headaches. तापर मंडे आसला बेलू मंडे ब्लूज मतलब तुम इच्छा ही नहीं काम करने पे मतलब इट इज लाइक तुम काम कर फॉर ईएमआई पे करने पे राइट जो जो तो तुम इच्छा नहीं काम करने पे एंड से काम तुम एक्सप्लोइट भी हो 90 आवर्स ऑफ वर्क व्हाट इज दैट जदि से जो डायलॉग जदि 90 आवर्स ऑफ वर्क सेतो कहि देता ना आई डोंट नो कौन हे था से टाइम रे बुझी पारछो सो हरारी यू आर गेटिंग ना मतलब मु तो डिटेल रे पढोनी आई एम जस्ट गिविंग अ जिस्ट सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड the concept, right? So this one I have it na ta out achi kon fascism hai na fascism achi mane eta kon ultra nationalism hai na it was used by Hitler मुसोलिनी माने 1914 14 18 आउ 39 रु 45 जो इंटर वॉर पीरियड जो हिला ना सही टाइम रे जो जर्मनी अछि मतलब इट इज अ राइज ऑफ इंडिविजुअल लीडर बुझी पाछो फैसिज्म इट इज अ राइज ऑफ इंडिविजुअल लीडर इट्स लाइक you are making fool of some people so that you are the greatest they can term as you are the greatest leader मतलब देखो how can I say a leader will come and will say you are you satisfied with your life no so ja hoji ठीक होची कि no तल करिवार कोन अछि liberty दरकार गोटे कथा करो you support me then I will give you everything what you want that's what Hitler used to do that with that propaganda machines na Germans were the मतलब they were the greatest breeds बुझी पाछो I mean you are the greatest breed what are you doing now तमको subjugate केमिति करि परिबे so it was like मतलब फैसिज्म मतलब बुझी पारो गोटे इंडिविजुअल को से लेवल गॉड लेवल रे दर्जा दबा बुझी पारो सो इट्स लाइक यू फूलिंग द पब्लिक राइट यू आर फूलिंग द पब्लिक सो दैट आपका ओरिजिन से भी कौन पैलिन जेनेटिक नेशनलिज्म कौन बुझी पारो पैलिन जेनेटिक नेशनलिज्म कौन okay just google about this word palingenetic nationalism है ना it's related to the fascism okay this is एमिति किछ ना कि आ भितर बहुत किछ अछि पढिया पे when the regular syllabus ना I will give you some details about that ता परे हमरो गांधीज्म कथा कुछ गांधीज्म राइट गांधीज्म तो गांधीज्म is about 3S कौन थला स्वराज आउडा कौन थला सर्वोदय ओके आउडा कौन थला स्वराज सर्वोदय एंड लेट मी टेक दिस अपॉर्चुनिटी है ना यस या सत्याग्रह है ना सत्याग्रह ओके स्वराज सर्वोदय एंड सत्याग्रह Gandhiji's 3S philosophy actually कौन थला कि Gandhiji was always talk about this non-violence है ना non-violence just think about non-violence what is non-violence कौन है what do you mean by non-violence मतलब you are not doing any violent activities against someone that you mean that right then Gandhiji will say no suppose out answer the if you are doing violence if you are not doing violence against them from तमे माइंड रे भी तमर वायलेंस नहीं तांको प्रति तम कर्म रे भी वायलेंस नहीं तांको प्रति या तम वचन रे भी वायलेंस नहीं तांको प्रति ओके that does mean non violence according to Gandhiji no said I be no it's all about love spreading love to humans environment animals डोंट यू थिंक हमर डीपीएस पिक्चर भी अछि बुझी पाछो 3S लव नॉन वायलेंस मतलब भी एटा अकॉर्डिंग टू गांधीजी इट्स ऑल अबाउट ड्यूटी यू आर डूइंग योर ड्यूटी फॉर द सेक ऑफ अदर पीपल सो दैट दे कैन फील सिक्योर बुझी पाछो एटा गांधीज्म ठीक अछि so add a lot of small gist so that you will understand what is Gandhism right tapre
Far right, center right, left, far left. This is the classifications है ना, आमर जो ideology होची ना, these are the actual classifications. Don't you think this is far right जोटा अच्छी, हमारा far right जोटा अच्छी, it called for the fascism, जोटा की palingenetic nationalism कौन थी, ultra nationalism कौन थी, because मैं हूँ, I am the only one, मतलब Hitler, I am the only one who can do this. Far right, तापर center right, आपको कौन थी conservative, conservative कौन थी, मतलब right wing कौन थी, right wing, मतलब that is not far right, but it will what it will do, it will talk about कौन मतलब कौन हमारा property secure करे पे कोई भी माने it will talk about what, it will talk about economy है ना, economy जितने free है परिबो, free economy, free market है ना, they will talk about this है ना, free economy with moderate social control, moderate control of government, this one center right जोड़ा अच्छी बुझे भाई, free market, free economy, जो trickle down effect, okay, they will talking about the trickle down effect, so that सी जहाँ भी jobs create करिबे, jobs create करे ता भितरे लोगों को भला है परिबो, they are talking about this center right, center है ना, this is called कौन कोई भी, okay, liberalism, liberals कोई, ठीक है, center left का कोई भी, socialist, socialist को कोई भी, बुझे पारे, socialist माने कौन, एठी कौन हबो, आ भितरे इट्स कॉल फॉर द गवर्नमेंट कंट्रोल, बुझी पाछ, आ भितरे गवर्नमेंट कंट्रोल आसीबो कि नै, सोशलिस्ट जोटा अछि गवर्नमेंट कंट्रोल करिवो, तमरे टिके कोन हबो, स्कीम्स आसीबो है ना, स्कीम्स आसीबो ताकि फ्रॉम तमर जो लाइफ हे गेला, तमरा बर्थ हे गेला, लेबर लॉस हे गेला, लेबर लॉस है ना, ता ऊपर तमरा कोन पॉलिसी आसीबो, दिस इज कॉल्ड सोशलिस्ट पॉलिसीज है ना, जोटा कि एडा माने काइंड ऑफ मिक्स एंड लिबरलिज्म ऊपर, लिबरल्स पॉलिसी मिक्स कोई पर राइट, दिस इज फार लेफ्ट जोटा कि कम्युनिज्म कौन थी, कम्युनिज्म है ना, जोटा कि यूटोपिया, दे टॉक अबाउट दिस बट एटा केबे इंप्लीमेंट हे परिबो, बुझी पारो, एठी कोन हबो मार्केट कंट्रोल, मार्केट रो टिके विदाउट माने कोन मार्केट रेगुलेशंस रहिबोनी, गवर्नमेंट विल बी ऑन बैक फुट, एठी कोन गवर्नमेंट टिके पळे आसीबो, बुझी पाछो, एटी मिक्स रहबो, एडा बे मिक्स एक्चुअली कोन देखो इंडिया रे कोन फॉलो होछि, इंडिया रे जो बैंडविड्थ अछि दिस वन, तुम डोंट यू थिंक दिस वन, इंडिया रे बैंडविड्थ सोशलिस्ट, लिबरल्स, कंजर्वेटिव, हमरो इफ यू गो थ्रू दिस ना, so somewhat I can relate BJP here, obviously no country is doing such things, काई गलो हमरो एडी कोन हमरो इट्स अ मिक्स, हम बुझी पाछो, हमरो बे क्लासिकल लिबरलिज्म चलनी, हमरो कोन काइंड ऑफ सोशल लिबरलिज्म चलछि, बिकॉज गवर्नमेंट इज कंट्रोलिंग, गवर्नमेंट इज ब्रिंगिंग लेबर लॉस तो पुनी रिफॉर्म भी हेछि, बट गोटे सेंस रे मु कहू दिस इज समवट लीन टुवर्ड बीजेपी आइडियोलॉजी, दिस इज समवट लीड टू लेफ्ट, या मु कांग्रेस कोइ परिबी, बुझी पाछ राइट, आई मीन दे फोकस ऑन द मार्केट मिनिमम गवर्नेंस, बुझी पाछ, मैक्सिमम गवर्नेंस, मिनिमम गवर्नमेंट एटी, तो एटी कोन स्टेट कंट्रोल दरकार, किए कहते कास्टिज्म माने कास्ट सेंसस कथा कहूँ, कास्ट आनो, कास्ट माने यू डिफाइन द ह्यूमन केते कास्ट अछि तुम एट देखि परिबो, दे आर अपोजिंग कास्ट सेंसस, मु जस्ट आई एम ट्राइंग टू कनेक्ट, आई एम नॉट फुल्ली माने ताको फुल्ली मु कनेक्ट कोनी, जस्ट ट्राइंग टू कनेक्ट सो दैट यू कैन रिलेट, बुझी पाछो, तापर एक्चुअली कोन इंडिया रे लिबरल्स फ्लॉड अछि, व्हाई फ्लॉड कोइ परिबी, हमरो बहुत सारा जिंस अछि जोटा कि आगु गले तुम जानिबो, काई गलो ए माने यूसीसी कथा कोनथि, यूसीसी कंजर्वेटिव्स, हमर जो बीजेपी यूसीसी एक्चुअली सेक्युलर पॉलिसी, बुझी पाछो, बुझो दे डोंट आई मीन एठी यूसीसी इंडिया कॉन्टेक्स्ट रे विरोध करंथि, ओके देयर शुड नॉट बी नो यूसीसी एंड ऑल दैट, तो तुम इंडियन कॉन्टेक्स्ट देखि पाछो, सेंटर राइट, सेंटर लेफ्ट, ओके, तो इंडिया रे कोन हुए, इट इज अ मिक्स ऑफ दिस वर्ड है ना, आमे फार राइट को भी जाउनु, फार लेफ्ट को जीवनु, ओके,
तो एठी जो फार लेफ्ट जोटा आसपारे जोटे कि एठी जो कोन कम्युनिस्ट पार्टी जोटा अछि हम एठी चाइना भी कोइ परिया चाइना नॉर्थ कोरिया इज अ क्लासिक एग्जाम है ना नॉर्थ कोरिया इज अ क्लासिक एग्जाम ओके तो एठी कोन हबो एटा काइंड ऑफ सोशलिज्म चाइनीज सोशलिज्म नॉर्थ कोरिया सोशलिज्म आसपारे बुझी पाछो सर एक कैटेगरी रे मो फिल अप करे आछु बुझी पाछो आ गोटे कथा फार लेफ्ट एंड फार राइट गोटे कथा के इट्स मीटिंग पॉइंट व्हाट डिक्टेटरशिप डोंट यू थिंक डिक्टेटरशिप देखो देखो हमें जो डिक्टेटरशिप जो वर्ड यूज कर ना इट माइट बी बैड फॉर अस हमको लागू डिक्टेटरशिप वर्ड इज बैड इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी हमको कौन सिखाई वी आर टॉकिंग अबाउट इंडियन डेमोक्रेसी फॉर एवरी आवर राइट डेमोक्रेसी इज द बेस्ट लोकंर फ्रीडम हवा कथा इफ यू गो एंड ओपन द चाइनीज कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 1 देज सेटी डिक्टेटरशिप इज देज सेति पई माओ जेडुंग जो थिले ना he called for the dictatorship कहीं मल्टी पार्टी सिस्टम जदि आसे ना it will weaken the government कहीं सब opposition जदि आसीबो ना they will work against the government सेते पई कोन हबो problematic हे जिवो तो dictatorship is good for China तांको पई ठीक अछि dictatorship according to Chinese but हमर कोन अछि हमको जोटा चाइल्डहुड रे पढा होछि डेमोक्रेसी फ्री थिंकिंग लिबर्टी से सब हम पई भलो तांको पई अलग बुझि पाछो so I hope you're getting all this है ना मैंने मोडे सम अप करे चेष्टा कली ताकि you can relate to it है ना एमिति ना कि मु बीजेपी को कंजर्वेटिव कोछि या कांग्रेस कंजर्वेटिव so that एमिति कहूनी but every party works for the welfare of nation है ना आज का डेट रे तमे ना सेंटर राइट भी हे परबो ना सेंटर लेफ्ट हे परबो you are always India is a mix of कोन कहते India is a country of mixed capitalism है ना no mixed economy कहीं हमारे ये सोशलिज्म भी रोची और कैपिटलिज्म भी रोची एंड कैपिटलिज्म को थोड़ा सा अदब से रहना पड़ेगा ऐसा नहीं कि तुम्हें लेबर लॉस वायलेट भी कर दबो यदि लेबर लॉस वायलेट कर दबो देन इट विल बी तुम पर फाइन भी लगी परिबो बुझी पारछो सेमिति बहुत सारे कंपनी पर फाइन भी लगै छथि बुझी पारछो से जिनसोटा so मु जहां भी देली so I try to give you some gist so that you can understand the concept है ना तो एतिक तो जानो at least so what is the idea so I will next class I will try to bring that questions जोड़ा में जो questions बने थिले तो I will most of the questions थोड़ा discuss करिबी so that you know है ना तो after 1 second जतला examination जतला आसीजिबो schedule जतला आसीजिबो तो I will try to change the schedule of political science ना last आज संडे सेकंड टेस्ट थिला है ना किछि पिला दैछंती तो मु next week within 3 to 4 days I will discuss the first test okay so first test small test thila 100 marks thila around 6 questions thila so that I can focus on the questions ठीक अछि मु क्वेश्चन ऊपर फोकस कर पारी तो किछि क्वेश्चन ऊपर फोकस करले ना it will cover many aspects significant aspects cover हे जो तमरो right so hope you enjoy the class है ना यदि if you I mean मतलब किछि डाउट then you can reach out to the institute then I will respond ठीक है correct